Hello everyone and a very good morning to all of you and welcome to BYJU'S Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. So as you all know, from Monday to Thursday we come up with the Hindu analysis at 11 a.m. in the morning, and today is 23rd January. आज 23 जनवरी है and we are here with the Hindu analysis of 23rd January. I will be discussing in both the English as well as in Hindi language. मैं अंग्रेजी और हिंदी दोनों में डिस्कस करूंगा. So let's start. अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप एक बार कमेंट में लिख दो यस सर यू आर ऑडिबल. ओके, सो टुडे इज मंडे 23rd January and the important articles of today's The Hindu are on first page. So पहला पेज पर है. So let's discuss this. Here it is an article which says Mr. Kiren Rijiju, the Law Minister of India, has said something. Kiren Rijiju endorses former High Court judge's view that top court hijacked the Constitution. Then here there is an article, exempt data revised, trade deficit narrows by $10 billion. So these two are actually important articles on the first page. तो ये दोनों हम लोग जानेंगे, पहला ये वाला और दूसरा ये वाला हम लोग आर्टिकल जानेंगे. So let's start without wasting the time. I hope you are aware, Mr. Kiren Rijiju, he is the Minister of Law and Justice. तो कानून मंत्री हैं, जिसको हम हिंदी में कानून मंत्री कहते हैं. So ये कानून मंत्री हैं भारत के. इन्होंने कुछ कहा है. सो इंडोर्सेस फॉर्मर हाई कोर्ट जज व्यू दैट टॉप कोर्ट हाईजैक द कॉन्स्टिट्यूशन. सो बेसिकली दिस इज इन कॉन्टेक्स्ट विथ. तो पहले इंडोर्सेस का मतलब क्या होता है? सपोर्ट करना, सपोर्टिंग द आर्ग्यूमेंट, सपोर्टिंग द आर्ग्यूमेंट एक तरह समझ लो, या फेवरिंग द आर्ग्यूमेंट. तो जो फॉर्मर हाई कोर्ट जज हैं, जस्टिस आर.एस. सोधी ने जो ओपिनियन दिया था उसको ये भी सपोर्ट कर रहे हैं. So actually there is a opinion given by Justice R.S. Sodhi. He is a retired Delhi High Court judge. Is a retired Delhi High Court judge. So he gave some opinion in the past related with Collegium and Supreme Court and all, and that is what is being reiterated or supported or endorsed by the current Law Minister of India. तो किरण जो जस्टिस आर.एस. सोधी जो थे वो रिटायर कर चुके हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के जज. उन्होंने कुछ कहा था अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, उसी को उन्होंने रिपीट किया है. Yes, he supports Injak over Collegium. Yes, Saujanya Sarkar, very good. हाँ, so that is what is being talked about. Now, अब देखो क्या है. I hope you are aware कि Collegium is the current system of appointing the judges in Supreme Court and High Court, right? So Collegium comprises of all the Supreme Court judges. So in case of appointment of Supreme Court, there are 5 Supreme Court judges. In case of appointment of a High Court judge, there are 3 Supreme Court judges. So both are Supreme Court judges. There is no any other people from outside to decide, है ना? और कोई लोग नहीं है, केंद्र सरकार का कोई और रोल नहीं है या किसी और का कोई रोल नहीं है, right? So that is what actually the word hijack the constitution refers to, right? Because if you read article 124, the appointment of judges, so generally these words are mentioned कि president will be appointing the Supreme Court judges in consultation with the Chief Justice of India, ठीक है? But over a period of time, due to a lot of judgments of Supreme Court, like you must have heard about first judge's case. These things we will be teaching in the paid classes. So if you second judge's case, if you are not from that, at least go and read it. Okay, third judge's case. So these judge's case, first judge's case, second judge's case, third judge's case, and in fact later fourth judge's case also came after NJAC. So these 4 judges case, if you the result of that actually led to the formation of what we call it today as collegium system. Okay, so it was actually originally started in second judge's case, was made very strong in third judge's case. So जो collegium system है वो कहीं संविधान में नहीं मेंशन है, बल्कि सेकंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस का रिजल्ट है ये. तो इसीलिए वो वर्ड यूज करें hijack the constitution, because originally that term was actually not mentioned. So this was actually the statement of Justice R.S. Sodhi also. Mr. Rijiju took to Twitter to share a video of the former Delhi High Court judge and called it the voice of a judge. तो उन्होंने इसको voice of a judge कहा, ठीक है? So in an interview, Justice R.S. Sodhi said only Parliament will amend the constitution, but here I feel the Supreme Court for the first time hijacked the constitution, and we will appoint judges for ourselves and the government will have no role in it. तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है हाईजैक कर लिया उनके हिसाब से कि सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेंगे, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं होगा, राइट? Yes, Rashmikant Oja, very good. Huh? So that is what actually he said. So, but yes, there are some statements like we will appoint judges endorsing this view. है ना?
Justice R.S. Sodhi also said top court could not frame laws as it did not have the right to do so. ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो कानून बना सके. However, there is the counter argument as well. ठीक है, so there are both the arguments, supportive as well as opposing the argument. I mean, there are both the arguments. दोनों पक्ष के लोग हैं, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं इसको, कुछ लोग अपोज करते हैं. So those who actually support this collegium and the law making power of Supreme Court, they cite an article. ठीक है, like this article, this line is mentioned in a constitution. Okay, so which article of Indian Constitution use this language? Law declared by Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India. It means if we read this line, it indirectly refers that even Supreme Court can also make laws, not only the Parliament. So जो लोग support करते हैं, those who support the argument that yes, Supreme Court has done right, they say that there is a line mentioned in Constitution which even gives the power to Supreme Court to make laws. So which line it actually is mentioned? Can anyone tell me? Yes, first judge's case is SP Gupta case. Very good, Zoya Khan. Haan. Please go and read all the three judges case. If you know it, fine. If you do not know it, I'll be discussing in paid the classes. Collegium system, NJAC. These are very, very important now. In fact, if you are attempting MH-CET exam or SLAT exam upcoming and all, so there can also these questions can be asked. Collegium, NJAC, basic structure. ठीक है, ये सब लोग पेड क्लासेस पढ़ाते हैं. ठीक है, NJAC, collegium, basic structure, these things you should be knowing. Then three judges case. These are very important ones. है ना? Yes, very good. I have got the right answer. Surendra is right. Very good. So the right answer is option B, 141. So the article 141 uses this language and it says law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India. Na? So the word law is mentioned. It means the judgment of a Supreme Court can be a law, is considered as a law, and there are constitutional experts who support it. They say yes, the Supreme Court can make laws. Okay, so there are examples also, like you must have heard about Vishakha guidelines. It is similar to a law which ideally should have been passed by the Parliament, but Supreme Court made such a law. Okay, so yes, people say yes, of course, that is also the argument. So there are both the arguments. दोनों तरह का पक्ष है. ठीक है. You can have your own opinion. So my job is just to explain. Now we are talking about NJAC. Yes, 143 is advisory jurisdiction. Yes, Saujanya Sarkar, right? NJAC we have discussed so many times, but again I'm asking. It was dash constitutional amendment passed by Parliament, which was struck down by Supreme Court. So which one constitutional amendment was that? 99, 101, 102, 103. What is the right answer? Please answer it. And everyone, please press the like button. We are seeing 7 likes, 16 is watching. So सबको like button press करते जाओ. And please tell me what was the majority. मतलब किस तरह था? 5-0, 4-1, 3-1, 3-2. What was the judgment of Supreme Court? ठीक है, ये भी बताना है कि कौन से रेशियो से कितनी मेजॉरिटी से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना है. यस, वेरी गुड. लेसा वानी, प्रिया, जोया खान, सुरेंद्र, प्रिया चवन. यस, 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ठीक है, ओके. एंड यस, 101 इज जीएसटी. यस, वेरी गुड, सौजन्य सरकार. एंड एक्चुअली इट वाज अ 4:1 जजमेंट. ठीक है, so one judge actually dissented. He supported the idea of NJAC, whereas 4 judges supported collegium. ठीक है, yes, Zidan Khan, you are right. A is the right answer. Now, if you have read about NJAC, I have told you many times to go and read about NJAC. It is it was supposed to be a how member committee. How many members should be there? 4, 5, 6, 7. When it was formed in 2014, but it was struck down by Supreme Court in 2015. But since the debate is being revived again, that is why I am asking कि how many members were supposed to be there. कितने members होने चाहिए थे? मतलब NJAC में होने थे, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया तो आपको बचा नहीं है. Yes, 4:1 था. जोया खान, right? People are saying B. Anyone else? देखो, 5 member कॉलेजियम में होता है सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट के लिए, सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए. बट NJAC में we are having 6, not 5. ठीक है. Now there is a homework for you. Although we will be discussing in detail in the paid classes, but still there is a homework for you. Please tell me. Please go and find out who are those. I mean 6 people. इसमें से कौन-कौन लोग थे? 6. ठीक है. So go and find out. It's a homework because NJAC is in the news. A 99th amendment, everything is in the news. So the probability of question being asked in the recent exams is very high. ठीक है. Go and find out. Yes. Now there was an article on the first page which actually talks about exempt data revised trade deficit narrows by $10 billion. Okay.
So exim word actually is itself exim. Now, if you cut it like this, it becomes export and this is import. So basically exim means export import data, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे आयात निर्यात का डेटा, है ना. ओके, अब देखो जो आयात निर्यात का डेटा है उसको रिवाइज किया गया और देखा गया कि ट्रेड डेफिसिट कम हो गया, राइट. सो ट्रेड डेफिसिट इज एक्चुअली मींस इट्स इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, राइट, है ना. मींस व्हेन इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट we are having deficit. And how do we calculate? So when we do import minus export, the deficit will be shown. Okay. So now trade deficit is generally not considered as good for the country. Trade surplus is considered as good. Why? Because whenever there is trade deficit, there will be decrease in foreign exchange reserve. ठीक है. तो जब ट्रेड डेफिसिट होगा तो हमारे यहाँ से डॉलर ज्यादा चला जाएगा ना, आएगा कम डॉलर या फॉरेन करेंसी, ज्यादा करेंसी चला जाएगा. बिकॉज हम लोग एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं. तो जब हम इंपोर्ट करेंगे तो डॉलर बाहर जाएगा, राइट. सो व्हेन इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, द डॉलर्स फ्लोज आउटसाइड द इंडिया. यस, हाँ, बट इट इज शोइंग कि नैरोज यानी कम हो गया है, ट्रेड डेफिसिट कम हो गया, राइट. सो दैट इज व्हाट इट सेज फॉर द फर्स्ट 8 months ऑफ फिस्कल ईयर 22-23. ये आप समझते होगे होपफुली, है ना. दिस इज फिस्कल ईयर 22-23, so which starts from 1st April ends in 31st March and all, है ना. ये तो पता होगा होपफुली, है ना. With the import bill being scaled down, up or down, etc. and all, that is what is being talked about. Now here it is, है ना. Yes, so these are the numbers. इसको number रटना नहीं है, no need to remember these numbers. Just have an idea कि actually it is released by Commerce and Industry Ministry and all. तो Commerce Ministry इसको release करती है. So just have an idea what is trade deficit, trade surplus, what is foreign exchange. जैसे CLAT 2020 में they gave a passage and in which they had talked about foreign exchange reserve, forex reserve, foreign exchange reserve. ठीक है. Okay, so you should be aware of that, है ना. Yes. Okay, now yes, Rashmikant Oja, very good. हाँ, you were right. हाँ, CGI to senior most judge, yes, NJAC के members. हाँ, go and find out other people should also find कि NJAC में कौन कौन से member थे. Now there's an article 10 killed in shooting near Los Angeles after a festival. ठीक है. अब देखो ये क्या है, let's discuss about this. Now I hope you are aware, actually yesterday it was in the news. Actually China का festival होता है. So there is a New Year festival of Chinese people and they were celebrating this in USA. So there were Chinese people living there and someone came and started shooting, killed 10 people and perhaps he killed himself inside the car. तो कोई आया, उसने गोली चलाना शुरू कर दी, अपने आप को ही मार दिया बाद में. Maybe we don't know exactly what is the reason. Perhaps he might be drunk or he might have been in depression or something like that. We don't know. Fine. Witness say California shooter had semi-automatic gun, right? So this is the article. China's lunar year New Year celebration होता है, उससे related ये news है. Okay, so just have an idea about it. And California, let me show you where exactly it is. So this actually happened in Monterey Park. US media reported. So if you see the map, here is India. ठीक है, this is USA, right? ये वाला USA है ना. Now here is the state of California. Everyone is aware of that. It's a very famous state. And here is a city very famous called as Los Angeles. Are you seeing it? ये देख रहे हो? Los Angeles is famous for what? Hollywood. Like Mumbai is for Bollywood, similarly Los Angeles is for Hollywood. Los Angeles जो है वो हॉलीवुड के लिए फेमस है. ठीक है. अब देखो इसी लॉस एंजलिस में आई मीन नियर टू लॉस एंजलिस देयर इज अ प्लेस, वही कौन पार्क लिखा है ना, Monterey Park. So here actually this incident happened. Monterey Park is the location near Los Angeles where this unfortunate incident happened. So just have an idea about it. इसको याद पता होना चाहिए. हाँ, lunar year है ना of Chinese people and all. Okay, before moving on guys, there's a small announcement. Those who are preparing for CLAT 2024, this is a course we are providing. 300 plus recorded videos, 300 plus hours of live session, 35 plus mocks, monthly magazines would be provided. Okay, this is a ticket to your dream law college. If you have any query, call on this number 9538895678. अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, राइट? Yes. Okay. Now, another thing is, yes, she's our student from our 1-year online classroom program and she got 18th rank in AILET. Next time we will be showing your image here.
So for that, you must join this course. That will be very very beneficial. अगर आपको कुछ सवाल पूछना है, this is the number, call on this. ठीक है? Okay. Yes. Now let's talk about editorials. So these are generally 4 editorials, 1, 2, 3, 4. तो पहले top 4 जानते हैं. Changing politics, incompatible governance and necessary pushback. So first let's talk about this. So he has used the word incompatible governors and changing politics. Now he is actually about he is actually criticizing governors at many places. कि कई बार गवर्नर को रोल शायद अच्छा नहीं रहा, उसी को वो बता रहे हैं. The governors are once again becoming public spectators in many states like Punjab, Maharashtra, Kerala, Tamil Nadu, Telangana, West Bengal, Jharkhand, Delhi, etc. and all. First, these are the states where non-BJP governments are there. देखो एक फेमस एलिगेशन जो हमेशा से लगता है वो ये है कि बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स the governor, so wherever the party ruling the state and center are same, there is no tussle between chief minister and governor. But when there are different political party in center and a state, then there is tussle starts between chief minister and governor. ये बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने लिखा है कि जब केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में सेम पार्टी चुनाव सरकार का चला रही हो, तो मुख्यमंत्री और गवर्नर में लड़ाई नहीं होती, मतलब टसल नहीं होता है. लेकिन जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार में अलग अलग पार्टी हो, तो कई बार ऐसा पास्ट में भी देखा गया है कि टसल होने लगता है थोड़ा बहुत, है ना. सो फर्स्ट, these are the states where non-BJP governments are in power. Second, the contrarian contravention governors are in the name of supposed power of the union or constitutional rectitude and all. That is what is being talking about. अभी रिसेंटली एक इशू हुआ था where actually the governor of Tamil Nadu left the legislative assembly and came out of it, and I hope you are aware of that. इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. We have discussed it in the past. Because he was supposed to address the legislative assembly of Tamil Nadu, and he was given the speech to read, but he skipped some portion, and because of which the government, the people from the government protested, and because of which he left and all, है ना. क्या हुआ था कि उनको स्पीच देने के लिए कहा गया था, because the governor addresses the houses before the beginning of the session, तो उसमें कुछ उन्होंने skip कर दिया, तो उससे गवर्नमेंट को नाराजगी हुई. Then the tussle started. We have already discussed it, so I'm not repeating it. While there have been endless arguments on whether governor enjoys discretionary power. Yes, discretionary powers क्या होता है? Now, generally we say कि president works on the aid and advice of council of ministers. Council of ministers मतलब prime minister and his ministers. ठीक है? Similarly, governor works on the aid and advice of council of ministers at state level. मतलब chief minister and minister. Aid and advice. This word is mentioned in constitution, है ना? Aid and advice. यहाँ भी वर्ड मेंशन है एड एंड एडवाइस. एड एंड एडवाइस से काम करते हैं, बट देयर आर सम डिस्क्रिशनरी पावर. डिस्क्रिशनरी पावर मतलब ही कैन वर्क ऑन हिज ओन विदाउट द एड एंड एडवाइस, यानी बिना एडवाइस के. सो विदाउट द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर द गवर्नर कैन टेक द डिसीजन. दैट्स कॉल्ड एज डिस्क्रिशनरी पावर. तो इसमें बहुत बड़ा डिबेट है कि क्या गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. इट्स अ बिग डिबेट वेदर द गवर्नर शुड हैव अ डिस्क्रिशनरी पावर और नॉट. ठीक है, so it's a great actually debate and all. One of the example of populist posture and all. इसको पढ़ लेना, है ना. Now he is actually referring to some of the states autonomy. States autonomy की बात कर रहे हैं, है ना. Like for example, autonomy मतलब कुछ independence from the center or having more powers and all. So 73rd and 74th constitutional amendment were brought around 1992 and all, है ना. 91, 92 के around. So this gave more power to 73rd amendment gave more power to Panchayati Raj institution, है ना. Like you must be aware of the thing called as Gram Sabha, then Mukhya Sarpanch, you know these things, है ना. 74th amendment gave powers to ULB, urban local bodies, like you must have heard about mayor, deputy mayor, ये सब वर्ड आपने सुना होगा, mayor, deputy mayor. Then the word like for example ward councillor, म्यूनिसिपल कमिश्नर एंड ऑल. तो इस सब अर्बन लोकल बॉडीज से आता है वर्ड. नाउ सो बेसिकली ही इज टॉकिंग अबाउट समथिंग गोइंग इन पास्ट. देन ही इज द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट द पीवी नरसिम्हा राव लेड रिफॉर्म्स. सो आई होप यू आर अवेयर ऑफ 1991 LPG रिफॉर्म्स, liberalization, privatization, globalization. This was actually done during the time of PV Narasimha Rao. He was the prime minister and Manmohan Singh was actually the finance minister at that time. Yes. ठीक है. तो 1951 में एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ था, जिसमें जिस टाइम पर प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह जी. ठीक है. सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट. देन ही इज रेफरिंग टू SR बोमाई केस. दिस इज रिलेटेड विद प्रेसिडेंट रूल.
So there were a lot of misuse of present rule happened and all. So that is why the Supreme Court's judgment in SR Bommai case is very important. He was the Chief Minister of Karnataka once. So president rules are related ki where there should be some. The center cannot impose president rule wherever it wants. There are some rules that they are supposed to follow. ठीक है? तो कुछ rules है जो उसको follow किया जाना चाहिए. Okay? Yes, that is what it is. And then administratively, the relative autonomy of states has enhanced their presence as well as responsibilities. तो वही बता रहे कि LPG reforms के बाद states के पास भी काफी revenue आया है and all. So they have got relative autonomy. Like 73rd, 74th amendment के बाद third tier government became slightly more powerful and all. So the states have become more powerful and all comparatively. This enhanced role of state does not in any way challenge union powers. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर राज्य का रोल बढ़ गया तो केंद्र सरकार की ताकत शक्ति कम हो गई. Doesn't mean so, है ना? So that is what he's going in history and all. उतना डिटेल नहीं जाना. State based initiative and all. इसको पढ़ लेना. I mean, I don't need to explain much. So whatever the important ones I have already explained. Governors assuming that they know that whether elected. देखो गवर्नर की criticism क्यों होती है? एक और रीजन ये है कि the critics say कि there is the chief minister and the governor. So governor is appointed by the president. He is not elected one, and the chief minister is elected actually, है ना? So he should be given more power, ना? Because in democracy the elected person has more power. And if governor will be given more power, then it becomes parallel government. Okay? तो अगर गवर्नर के पास भी सारी पावर जितने सीएम के पास है वो दे दी जाएगा तो पावर पैरेलल गवर्नमेंट हो जाएगा, यानी दोनों के पास इक्वल पावर है तो दोनों में टसल होने लगेगा एंड ऑल. So that is why generally many constitutional experts favor that chief minister should have more power and all. ठीक है, इसी पर है तो इसको पढ़ लेना आप. Now yes, सौजन्य सरकार SR Bommai case introduce some rules, right? हाँ. Now the next is necessary pushback. Now this is related with collegium's recommendation for 3 people to be appointed as a high court judge. जैसे कि आपको पता होगा, so for an appointment of a high court judge there is a 3-member collegium of Supreme Court. So 3 senior most judges of Supreme Court refer to the law ministry that recommend to the law ministry that these people should be appointed as high court judge. ठीक है? So 3 लोगों को, so these were the 3 people actually, Mr. Saurabh Kripal, Mr. Someshekhar Sundaresan and John Satyan. So these 3 people were recommended by Supreme Court, 3-member Supreme Court collegium for a high court judge, for appointment of high court judge. ठीक है, तो इन तीनों को अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज के लिए कॉलेजियम ने रिकमेंड किया नाम. So the law ministry or the government returned it back by citing some reasons. तो केंद्र सरकार ने वापस भेजे, या लॉ मंत्रालय ने वापस भेजा कुछ रीजन बताते हुए. Now if the collegium retreats it, then according to the 3rd judge's case the government has to accept it. यानी एक बार वापस भेज सकती है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट दोबारा भेज रही है then the government has to accept it. Now why it became famous? In a first Supreme Court collegium puts on record reasons to reject center's objections to proposal. तो पब्लिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये बात रिकॉर्ड में रखी कि क्यों जो केंद्र सरकार के जो ऑब्जेक्शंस हैं वो उसको उसने रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने. मतलब पब्लिकली बताया कि देखो ये रीजन है बट ये स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है. सो लाइक फॉर एग्जांपल हियर इट इज, सो लिव लॉ की आर्टिकल है, सो यू कैन रीड इट. लाइक फॉर एग्जांपल ही हैज एक्सप्रेस्ड व्यूज इन पेंडिंग इश्यूज, ये सेंटर ने कहा, तो उसको द काउंटर द सुप्रीम कॉलेजियम सेड दिस अंडर आर्टिकल 19 एवरीवन हैज फ्रीडम ऑफ स्पीच. देन सिमिलरली मिस्टर सौरभ कृपाल, सो द गवर्नमेंट सेड ही इज अ गे, तो उसके काउंटर में कॉलेजियम ने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल टू डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन. सिमिलरली मद्रास हाई कोर्ट के लिए देयर इज अ लॉयर, सो द गवर्नमेंट सेड कि ही रोट एन आर्टिकल अगेंस्ट पीएम मोदी, क्रिटिसाइजिंग पीएम मोदी. सो द कॉलेजियम सेड कि नहीं, sharing an article criticizing the prime minister will not affect the suitability of the candidate. That is what actually the collegium said. तो collegium ने इसको पब्लिक में डाला. Why? Because actually collegium की भी बहुत सारी criticisms हुए थे. Okay, so the lot of criticisms actually happened of collegium कि collegium जो है ना, जो सुप्रीम कोर्ट की collegium है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है. So the main criticism actually is that it is opaque. There is no transparency. So कुछ हद तक एक्चुअली ये बेटर है, इट्स ऑन द बेटर साइड कि एक्चुअली दे आर कमिंग अप विद ट्रांसपेरेंसी, दे आर टेलिंग यू द रीजंस. ठीक है, तो एक गुड स्टेप है कि यस द कॉलेजियम शुड रिड्यूस द आइडिया ऑफ ट्रांसपेरेंट कॉलेज ओपेकनेस एंड दे शुड कम अप फॉर ट्रांसपेरेंट, यानी बताएं कि क्या रीजन है, मैं किसी आदमी को चुन रहा हूँ या नहीं चुन रहा हूँ, है ना, एज अ जज और हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज. हाँ,
I think it's very much crystal clear, hopefully. Yes. Now, that is what is being talked about. तो उसी आर्टिकल में यही जो साइड वाली आर्टिकल थी उसी पर रिलेटेड है ना. So Supreme Court Collegium has done well to push back against union government attempts to block the appointment of some advocates in the High Court and all, है ना. So इसी पर आर्टिकल है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. Go and read about it in detail. Now, देखो एक आर्टिकल ये है, रिमाइंडर ऑफ द फ्लॉज इन इंडियाज अर्बनाइजेशन पॉलिसीज. फ्लॉज मतलब क्या था? कमी, शॉर्टेज. और फ्लॉ आप समझ सकते हो, हाँ शॉर्टेज तो नहीं ठीक पड़ रहेगा, कमी हम लोग हिंदी में कह सकते हैं. और flaws means the rule is not perfect or the urbanization policies are not very perfect. There are some खामी जिसको हम कहते हैं, कमी है ना, in that. So what are the flaws? So he is actually a former deputy mayor of Shimla, the capital of Himachal Pradesh, and he has written an article. So it means he will be having a good experience. चूंकि ये खुद deputy mayor रह चुके हैं तो उनको experience होगा काफी, है ना. A report by World Bank released in November last year on financing India's urban infrastructure needs focuses on private investment ameliorating urban problems and all. The push to attract private capital since 90s followed by the urban reforms, etc., smart city mission, etc. And now this report continues plaguing India's policy, etc. and all. देखो ये है क्या, मैं बताता हूँ. अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जरूरी है. So not only public investment means not only government investment, but private investment is also required in building urban infrastructure. ठीक है ना? So building bigger projects and all. That is what the discussion is. So after 3 decades of reforms, urban finance predominantly comes from the government. देखो अभी कौन से रिफॉर्म की बात हो रही है? Again I have told you 74th constitutional amendment जो कि 92 के आसपास हुआ था ना. So if you add 30 years it becomes 2022 है ना. So 3 decade 30 साल के बाद भी अर्बन फाइनेंस यानी जो अर्बन लोकल बॉडीज है ना, so like mayor, deputy mayor, they are part of those urban local bodies. Or the finances needed to fund urban capital 48%, 24%, 15% derived from central, state and city governments respectively. ठीक है. Public private partnership projects contribute 3% and commercial debt 2%. तो यानी केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से पैसा आता है खास ज्यादातर, तब जाकर के कोई काम हो पाता है ना. That is what it is discussed. है ना. The World Bank estimates that nearly $840 billion etc. would be needed for investment in urban India. तो $840 billion यानी 70 लाख करोड़ चाहिए अगर अर्बन इंडिया में इन्वेस्ट करना है और प्रॉपर कैन से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप वगैरह करना है. सो लाइक स्मार्ट सिटी, अमृत, तो ये सब योजना है, इसको पढ़ना होमवर्क क्लास के बाद. दिस इज मिशन कॉल्ड एज अमृत, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन. देन प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सब पढ़ना जाके. आवास योजना यू कैन अंडरस्टैंड इट्स फॉर हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम. इसका टारगेट था एक्चुअली हाउसिंग फॉर ऑल. द टारगेट वाज 2022 कि एवरीवन शुड हैव हाउस होल्ड बाय द एंड ऑफ ईयर 2022, बट आई थिंक इट हैज नॉट बीन अचीव्ड. अब देखना, पता करना हाउसिंग फॉर ऑल का क्या स्टेटस है. द टारगेट वाज एक्चुअली कि बाय द एंड ऑफ 2022 एवरीवन शुड हैव हाउस होल्ड. 2022 के एंड तक सबके पास घर होना चाहिए. The basic problem with this report and the other report drawn up in a similar fashion is that they are made up using a top to bottom approach with too much on a focus on technocentric solutions and all. हाँ, तो टॉप टू बॉटम अप्रोच, एक बॉटम अप अप्रोच होता है, एक टॉप टू बॉटम अप्रोच होता है. टॉप टू बॉटम अप्रोच का क्या मतलब होता है? मतलब ऐसा समझो, you can understand the central government or the state government is giving a share of revenue to the local government to do actually urban local government to do infrastructure project. But जो काउंटर आर्ग्यूमेंट है वो ये होता है कि नहीं, अर्बन लोकल बॉडीज शुड आल्सो हैव द पावर टू कलेक्ट टैक्सेस. यानी उनके पास पावर होना चाहिए टैक्स कलेक्शन का. नीचे से प्लानिंग हो, ऊपर तक जाए, राइट? दैट्स कॉल्ड एज बॉटम अप अप्रोच. सो द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. से पहले जो टास्क फोर्स बनाई गई थी, सो द टास्क फोर्स व्हिच वाज मेड टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 74th, केसी शिवरामा कृष्णन हैज सजेस्टेड that transferring subject to the city government, suggesting 10% of the income tax collected from the cities be given to urban local bodies. यानी मान लो एक सिटी है, let's say for example, let's take an example. So he's a deputy mayor of, a former deputy mayor of Shimla. So let's take an example of Shimla. तो शिमला से मान लो for example the people used to give income tax. तो मान लो 1 करोड़, there are 10 crore rupees, 10 crore income tax is collected. I'm just giving an example. So out of that 10%, rupees 1 crore should be given to the urban local body of Shimla government, Shimla people like mayors and all, and they would be using in actually implementation of those projects. उसी का 10% इनकम टैक्स वहां चले जाना चाहिए ताकि वो लोग उसका
यूज कर सके. सो दैट इज व्हाट एक्चुअली द रिकमेंडेशन इज. हाँ, तो जनरली एक्चुअली होता क्या है, जनरली बॉटम अप अप्रोच इज कंसिडर्ड एज मोर सक्सेसफुल. नीचे से ऊपर अगर कोई चीज जाती है तो उसको ज्यादा अच्छा समझा जाता है. टॉप टू बॉटम इज जनरली नॉट कंसिडर्ड एज वेरी गुड मेनी टाइम्स. ठीक है, तो बॉटम अप अप्रोच जो होता है कि नीचे से विकास हो, यानी एकदम लोअर लेवल से, सो ग्राम सभा से, देन लोकल लेवल वार्ड काउंसलर से, देन इट शुड, देन ऑफ कोर्स जैसे कहा जाता है ना कि वी नीड स्मार्ट विलेजेस फर्स्ट. पहले हम लोग को स्मार्ट विलेज चाहिए. ठीक है, then there are people who say, means the scholars say, then we can have smart city. फिर उसके बाद स्मार्ट स्टेट, स्मार्ट इंडिया बन जाएगा. राइट, तो नीचे से स्टार्ट करना है. सो दैट इज व्हाट द आइडिया इज, बॉटम अप अप्रोच, है ना. सो दैट इज व्हाट एक्चुअली मेनी पीपल रिकमेंड. हाँ, नीति आयोग एक्चुअली बॉटम अप्रोच की बात करते हैं. हाँ, राइट. सो इसी के बारे में, सो गो एंड रीड इट. अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में उन्होंने डिस्कस किया है. नाउ देयर इज एन आर्टिकल, इट्स टाइम फॉर इंडियाज यूनिवर्सिटी टू जॉइन द वर्ल्ड. ये ओपिनियन पेज पे आर्टिकल थी. देखो, आपको पता होगा इंडिया इज एज्यूमिंग G20 प्रेसिडेंसी. ये तो पता होगा आपको. आई होप यू आर अवेयर 2023 इंडिया वुड बी द G20 प्रेसिडेंट. ठीक है, इट इज नॉट टाइम फॉर इट टू जॉइन द वर्ल्ड्स एकेडमिक कम्युनिटी एज अ प्लेजर प्लेयर एंड ऑल. एकेडमिक कम्युनिटी, सो वी आर कंसर्न नाउ, द ऑथर इज कंसर्न अबाउट एकेडमिक्स. ठीक है, कि बिग इंस्टीट्यूशन और सक्सेसफुल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुड बी देयर. राइट, है ना. So we are having national education policy 2020 also. 2020 में एक national education policy भी आई थी, है ना. Then India's academic system is second largest in the world, second largest है world में, है ना. So that is what is talking about. So India should use the leadership opportunity of G20 to actually further its or to improve the education and all, especially the higher education. Research promoting innovation through richer collaboration. तो अभी भी क्या है ना, जो रिसर्च वर्क है अभी भी उतना ज्यादा नहीं होता है. मींस वी नीड टू डू मोर रिसर्च, है ना. तो रिसर्च मतलब क्या, जैसे आप देखोगे यूएस के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में बहुत बड़े बड़े रिसर्च होते हैं. सो वी शुड आल्सो बी प्रोमोटिंग दीस टाइप्स ऑफ रिसर्च इन आवर ओन कंट्री, है ना. दैट इज व्हाट द आइडिया इज, है ना. इंडिया इज नॉट ओनली द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट एकेडमिक सिस्टम बट आल्सो वन ऑफ द वर्ल्ड्स कॉम्प्लेक्स एंड लिटिल अंडरस्टूड एकेडमिक एनवायरनमेंट्स एंड ऑल. ठीक है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं. देन यस, इंडिया हैज कम अप विद द कांसेप्ट ऑफ NIRF. आई होप यू आर अवेयर ऑफ दैट, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क. इसमें रैंकिंग दिया जाता है. सो रैंकिंग ऑफ डिफरेंट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज डन. NIRF के अंदर डिफरेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की रैंकिंग होती है. आपने देखा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कम्स अप विद दिस. सो दिस एक्चुअली इन अ सेल्फ प्रमोट्स द आइडिया ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, है ना, कि मेरी यूनिवर्सिटी ऊपर होनी चाहिए तो लोग मेहनत करेंगे एंड ऑल, है ना. इंडिया रैंक्स थर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ PhDs अवॉर्डेड इन साइंस एंड इंजीनियरिंग. सो नंबर ऑफ PhD में तीसरे रैंक पर है, बिकॉज वी हैव a huge population as well. India's Global Innovation Index rank is 81, was 81 in 2014 and increased to 40. तो ये अच्छी बात है कि 2014 में 81 था, now it has increased to 40. So we are improving in innovation and we need to improve more. और उसको improve करना है. हाँ, research MIT, Stanford, Harvard, right? रश्मिकांत ओझा. हाँ, so we need to improve, like we have in India also, like ISC Bangalore. So this is famous for research, है ना, in science field. There are ITs also, IT Delhi, Bombay and all. These are also famous for research work and all. लेकिन तो भी जैसा उन लोग के लेवल का है अभी उतना शायद नहीं हो पाया, है ना. So still we should be improving a lot to have our research at par with the big universities of USA and all, है ना. So then Times Higher Education Ranking की वो बात कर रहे हैं. So ISC in the 251 into 300 range. अब देखो उसमें क्या है कि जो Times Higher Education Ranking आया उसमें IISc बैंगलोर, जो कि इंडिया का सबसे वन ऑफ द टॉप मोस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट मान सकते हो, या टॉप मोस्ट साइंस इंस्टीट्यूट, इट हैज गॉट 251 into 300 मार्क्स. 251 into 300. टॉप 50 वर्ल्ड के में नहीं आ पाया, या टॉप 100 में नहीं आ पाया. इवन द बेस्ट नोन IITs आर ऑल्सो नॉट, आई मीन एट द वर्ल्ड स्टेज वी आर स्टिल एक्चुअली behind it as far as research and all is concerned, है ना. हाँ, so the recent announcement, IIT खड़गपुर will be establishing a branch in Malaysia. तो IIT खड़गपुर जो है वो मलेशिया में अपना ब्रांच एस्टैब्लिश करेगा, है ना. So that is what India uses English as the main language of science and higher education, which makes it much easier to interact with the rest of the world. हाँ, एक फायदा ये है कि जब हम लोग क्या इंग्लिश में पढ़ाया जाता है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, राइट. So the benefit is that if Indian youths are actually very well versed in English, then they will be very easy in getting, I mean, it will be very helpful in getting the jobs, because English has now become universal language. So even if you are learning in other language, in Hindi, Sanskrit, or any other local language,
Gujarati, Bihari, Bhojpuri or any other language, you must be knowing English because it has become a universal language and it will be helpful for you in getting jobs very easily, right? तो जो हाँ तो अगर अंग्रेजी बच्चे को आती, चूंकि इंडिया में इंग्लिश में सिखाया जाता है कॉलेजेस में, तो उसका एक बेनिफिट ये है कि जॉब लगने में आसानी होती है नॉल, है ना. The internationalization initiative outlined in NEP is an important start. India's G20 leadership is also excellent opportunities and all, है ना. So India की G20 initiative एक excellent opportunities है ना. So that is what is being talked about. So just go and read it about it. We have discussed it. ठीक है, जितना डिस्कस कराना था we have already discussed. One more thing is that on 29th January, आज 23rd है, after 6 days, we'll be having a session at 7 p.m. With Abhimanyu sir, free workshop to get a NLU call in CLAT 2024. तो एक फ्री वर्कशॉप है कि CLAT 2024 से रिलेटेड, ठीक है. So आपको करना क्या है कि there is लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, उससे जाके रजिस्टर कर लेना है. एंड प्लीज डाउनलोड दिस ऐप, बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप डाउनलोड कर लो. गो टू CLAT एंड लॉ सेक्शन, ठीक है. एंड हेयर एंड देयर यू विल गेट अ लॉट ऑफ वीडियोस एंड ऑल, बहुत सारा आपको वीडियोस वहां पे भी मिल जाएगा. सो इफ यू हैव नॉट डाउनलोडेड द ऐप, प्लीज गो एंड डाउनलोड इट, है ना. और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इससे रिलेटेड, फ्री वर्कशॉप से रिलेटेड. Now the next one is dragon tightens the grip. Whenever in international relation we talk about dragon, it means China, ठीक है. ये आपको समझना पड़ेगा कोड वर्ड, ठीक है. So tightens the grip. अब देखो क्या लिखा है. In 2022 India's import from China touched a record high while export fell. अब क्या हुआ है कि we are actually importing a lot, according to the author, है ना. Import बढ़ गया and export actually has got decreased, ठीक है. डिक्रीज, है ना. आयात ये निर्यात कहते हैं. तो आयात जो है, जो चाइना से इंडिया आने वाले, भारत आने में, वो आयात बढ़ गया और निर्यात कम हो गया. तो अब इससे होगा क्या. सो व्हेन वी एक्चुअली एक्सपोर्ट वी गेट डॉलर्स एंड व्हेन वी इंपोर्ट वी लूज आवर डॉलर और वी सेंड द डॉलर्स. तो इन टोटल क्या हो गया कि डॉलर्स विल बी रिड्यूस, है ना. यस. और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन इंडिया विल रिड्यूस. ओके, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो जाएगा. तो आप देख सकते हो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर. तो राइजिंग इंपोर्ट्स, यानी अब आप देखोगे यहाँ पे हालांकि थोड़ा सा कम हुआ है, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे फॉर द पास्ट 20 ईयर्स या बड़े लेवल पर, तो जनरली राइज किया है. इन जनरल इट इज अ राइजिंग ट्रेंड. हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा डिक्लाइन भी किया है. यस, अग्रीड. इंपोर्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इट. एंड इफ यू टॉक अबाउट एक्सपोर्ट्स, देन एक्सपोर्ट्स अगर आप देखोगे तो ओवरऑल देखो यहाँ से बढ़ा भी था, फिर यहाँ के बाद फिर नीचे भी गया, फिर ऊपर हुआ, फिर नीचे गया. यहाँ पर आई थिंक इट इज समवेयर अराउंड 2020 के बाद ये डाउन चला गया है अभी, है ना. तो इससे क्या होगा कि ट्रेड डेफिसिट विल वाइडन एंड इन फेवर ऑफ एक्चुअली ट्रेड डेफिसिट विल और ट्रेड विल गो इन फेवर ऑफ चाइना. आप समझ हो. तो ट्रेड डेफिसिट जो है वाइडन हो जाएगा इससे, है ना. वाइडनिंग द ट्रेड डेफिसिट, यानी ट्रेड डेफिसिट और ज्यादा हो जाएगा, यानी इंडिया एक्सपोर्ट कम किया और इंपोर्ट ज्यादा किया उससे. ओके, सो दैट इज व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड. तो क्या क्या हम लोग इंपोर्ट करते हैं. आई होप यू आर अवेयर. लिथियम आयन बैटरी बहुत फेमस है, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ज्यादातर. देख तो कितनी सारी मोबाइल कंपनी है जो चाइनीज है, वी यूज इट इन इंडिया, है ना. सो दैट इज व्हाट इज इट इज, है ना. हाँ देखो, ये एक आर्टिकल आई थी 13 जनवरी को. इंडियाज इंपोर्ट फ्रॉम चाइना रीच रिकॉर्ड हाई एंड ट्रेड डेफिसिट सर्जेस. सर्जेस मतलब इंक्रीज, बढ़ गया बियॉन्ड $100 बिलियन. तो जो ट्रेड डेफिसिट है वो और बढ़ गया, यानी हम लोग चाइना से और ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट उसके मुकाबले उतना नहीं हो पा रहा है. दैट इज व्हाट इट इज. ओके, यस. नाउ देयर इज एन आर्टिकल, यूएस मिशन इन इंडिया टू रेज स्टाफ स्ट्रेंथ टू स्पीड अप वीजा प्रोसेसिंग. देखो, व्हेन लेट्स से यू वांट टू गो टू यूएसए, सो यू नीड टू फर्स्ट गेट द पासपोर्ट डन, देन यू हैव टू अप्लाई फॉर वीजा इन यूएस एम्बेसी, है ना. ऐसे ही होता है ना, यूएस एम्बेसी और यूएस काउंसुलेट. तो एम्बेसी इज जनरली इन द कैपिटल सिटी एंड काउंसुलेट इज इन अदर सिटीज, ठीक है. तो अगर आपको अमेरिका जाना है तो आपको पहले अपना भारत से पासपोर्ट बनवाना होगा, भारत सरकार से रिक्वेस्ट करके, फिर यूएस एम्बेसी से रिक्वेस्ट मांगना होगा, वीजा जिसको हम लोग कहते हैं कि हमको वहां जाना है, राइट. सो एक्चुअली यूएस एम्बेसी विल बी सेटिंग अप मोर, एक्चुअली विल इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टाफ सो दैट स्पीडिंग अप वीजा प्रोसेसिंग विल हैपन. So it means it is in short attracting more Indians towards USA. एक तरह से आप समझ सकते हो, है ना. Now let's move on further. Shompen tribe is found in Jharkhand, Manipur, Lakshadweep, Andaman Nicobar because it is in news. ठीक है, इसीलिए हम पूछ रहे हैं. Jharkhand, Manipur, Lakshadweep, Andaman Nicobar. What is the right answer? Everyone, please press the like button, guys. सबको like button press करते जाओ. Share this video. Subscribe to our channel as well. Shompen tribe जो कि न्यूज में है,
वो कौन सी जगह आपको मिलेगी ज्यादातर, झारखंड में, मणिपुर में, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार? आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। एंड व्हाइट इज इन द न्यूज, कोई बता सकता है, कोई बंदा बता दे कि व्हाइट वाज इन द न्यूज? Reason, if you have read the newspaper, you can answer it. Yes. I'm very sorry, I haven't got the right answer yet. The right answer actually is Andaman and Nicobar Islands. ठीक है, D is the right answer. तो यहाँ पर एक आर्टिकल है, फॉर्मर सिविल सर्वेंट राइट टू प्रेसिडेंट ऑन आइलैंड प्लान। ठीक है, इसमें है क्या चीज? सो द प्रोजेक्ट थ्रेटन्स टू डिस्प्लेस एक्सट्रीमली वल्नरेबल शॉम्पेन ट्राइब। ठीक है, अब देखो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो। देखो, here is India, I mean, and this is also a part of India. I hope you must have been taught in your school days. आपको बताया गया होगा स्कूल डेज में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ये इंडिया का पार्ट है ना? अब देखो, ये अंडमान निकोबार आइलैंड है, इसमें से एक निकोबार, ये वाला आइलैंड है, इसको कहते हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड, ग्रेट निकोबार आइलैंड। ठीक है, यहां पर है। ओके, यस। Now, यहाँ पर actually, these are actually ecologically very sensitive, or you can say there are a lot of mountains, biodiversity will be there, is very high and all, है ना? तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन करना इन्वायरमेंटलिस्ट सही नहीं मानते हैं। सो एक्चुअली इन्वायरमेंटलिस्ट अपोज heavy construction in this region. Okay. Now, the constitutional conduct group, which includes 100 former civil servant. What is for civil servant? Civil servant means IAS, IPS, IRS, ठीक है, IAAS, जितने भी ऑफिसर्स होते हैं क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर, सिविल सर्वेंट कहते हैं ना। So the former IAS, IPS, IRS, IAAS and their other officers, ICAS, बहुत सारे ऑफिसर होते हैं, and they have written to the president कि that this Great Nicobar Island there should not be mega infrastructure push in the Great Nicobar Island and all. ठीक है, 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, and it को अंडमान निकोबार इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन विल बी इम्प्लीमेंटिंग दिस। तो वो लोग ये बोल रहे हैं कि शॉम्पेन ट्राइब जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी वहां पर अगर बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन वगैरह होगा तो। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड अबाउट इट। सो दे हैव एक्चुअली रेज दिस कंसर्न टू द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री एंड ऑल। हाँ, ऋषिता चौधरी, वेरी गुड, राइट। हाँ, आप सही बता रहे हो। हाँ, तो शॉम्पेन ट्राइब, there are lot of tribes act like Shompen tribe, ONJ tribe, Joreva tribe, these tribes you will find in Andaman Nicobar, and they are actually away from the common the rest of the world. तो उनको स्टोन एज टाइप से रहते हैं। हाँ, ठीक है, आपने बिल्कुल सही बताया। यस, हाँ, so they are actually not in contact with the rest of the world. Yes. Now पेज नंबर 14 में, वर्ल्ड पेज में we have discussed it, है ना? ये मैंने बताया, गनमैन kills 10 during lunar new year fete in USA. We have already discussed it in the tutorial. So I'm not explaining again, है ना? इसको पढ़ लीजिएगा। All India rank 18, Anika Sehgal got. She was from our paid batches. So just if you have any query regarding the paid classes, पर नीचे नंबर है 9538889568 पर कॉल कर लेना अगर आपको कोई सवाल पूछना है। ठीक है, so this is all about today's class. Please subscribe to our channel, follow us on Instagram, Facebook, Telegram, and download the BYJU'S exam prep app. Thank you everyone. ऐप डाउनलोड कर लेना ये वाला, ठीक है, और CLAT और लॉ सेक्शन पे जाना, you will get a lot of videos there. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.